Financial Management Module 170, and this is about terminal cash flow. The word terminal simply means ending cash flow, the cash flow at the end of the useful life of the project or the asset. जब भी हम कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई नया एसेट खरीदते हैं, तो उसकी एक यूज़फुल लाइफ होती है जितने अरसे तक वो प्रोडक्टिवली हमारे बिजनेस में इस्तेमाल किया जा सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज़ एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ. तो अपनी उस यूज़फुल लाइफ के दौरान वो हमें इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज प्रोवाइड करता है. बट इन द लास्ट ईयर of the operation of that asset is the cash inflow or maybe the outflow, but it is called the life end cash flow or terminal cash flow. यानी लास्ट ईयर की कैश फ्लो को हम टर्मिनल कैश फ्लो का नाम देते हैं. मोस्टली ये इनफ्लो ही होती है, लेकिन ये आउटफ्लो भी हो सकती है. हम दो सिनेरियोज देखेंगे और ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी टीडियस है. इसको आप गौर से देखिए कि ये स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रही हैं, इसका पहला हिस्सा तो वही है जो कि हमने इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते वक्त देखा था. और उसकी बुनियादी वजह यही है दैट इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इज़ ऑल्सो देयर इन द लास्ट ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. आखिरी साल में भी तो वो प्रोजेक्ट हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा और उसके नतीजे में हमारे पास कैश इनफ्लो होगी. So the first part of it, if you look at it from the top, you can see that till the line G we have got incremental cash inflow of the last year, और इसकी कैलकुलेशन जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम पहले देख चुके हैं. अब टर्मिनल कैश फ्लो में मज़ीद क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. द फर्स्ट वन इज़ द साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट, the residual value of the asset, the terminal value of the asset. यानी वो वैल्यू जिस वैल्यू पर एसेट अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पर बेचा जा सकता है. यू मे कॉल इट द स्क्रैप वैल्यू. इट इज़ मिनिमम बट इट इज़ सर्टनली अ वैल्यू विच will bring cash inflow to us. So at the end of its useful life, when we will sell the asset for a certain amount, this will be our profit or gain, and on this gain or profit we have to pay some tax. So salvage value को हम net inflow में, incremental inflow में add कर लेते हैं because this will bring us inflow, लेकिन taxes क्योंकि हमें pay करने हैं उनको हम minus कर देते हैं. In addition to this, whenever we start a new project, we have to allocate some working capital for this. Working capital असल में वो अमाउंट है जो कि उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें चाहिए. इस पर हम पिछले मॉड्यूल्स में बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं. बट दिस इज़ एक्चुअली द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल परचेज, फॉर पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, फॉर पेमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस. सो वंस अ प्रोजेक्ट इज़ टर्मिनेटेड, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, तो वो वर्किंग कैपिटल जो कि हमने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो भी रिलीज हो जाएगा, यानी वो भी हमारे पास वापस आ जाएगा. एंड दैट विल ऑल्सो बी अ कैश इनफ्लो. सो दैट इज वाई वी ऑल्सो एड इट. So if you look at it from line G, you can see that in the incremental cash inflow of the last year, we add the salvage value of the asset, which is an inflow. We deduct the amount of tax that we have to pay on this salvage value, and we also add back the working capital, which is released because of the end of the project, and the amount that we get is called terminal cash flow. Now in this case, it is most likely that it will be an inflow. Now there is another possibility. Have a look at this other table. The other possibility is that at the end of the useful life, we do not get any gain or any revenue from the सेल ऑफ द ओल्ड एसेट. यानी एसेट की कोई स्क्रैप वैल्यू हमें नहीं मिल रही, एसेट की कोई साल्वेज वैल्यू हमें नहीं मिल रही, बल्कि उस एसेट को, उस प्रोजेक्ट या प्लांट को अनस्टॉल करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए और उसको
स्क्रैप करने के लिए हमें मज़ीद कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है. दिस मे ऑल्सो बी अ situation. So in that case, you can see that till line G, we have got the same incremental cash inflow that is there in the during the useful life of the asset. But if we have to incur additional costs to dismantle or dispose of the asset, then it will be a cash outflow. और यहाँ पर हम इसको माइनस या डिडक्ट कर देते हैं अपने फाइनल ईयर के इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो में से. क्योंकि ये कॉस्ट है और इस कॉस्ट के ऊपर हमें कुछ टैक्स सेविंग हो जाती है, यानी हमारी टैक्स आउटफ्लो नहीं होती, तो इसलिए हम उसको ऐड बैक करते हैं उस इंक्रीमेंटल कैश फ्लो में. और अगर वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है तो उसको इनफ्लो कर लेंगे. और किसी बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसा हो सकता है कि हमारा मज़ीद इंक्रीमेंटल जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाए, तो उस केस में हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो हम इस डिस्कशन को यहाँ पर इस तरह वाइंड अप करते हैं कि जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो असल में लास्ट ईयर के इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो के साथ साथ उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करने या उसके स्क्रैप वैल्यू को सेल करने से जो कैश फ्लोज जनरेट होती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है या जो टैक्स की सेविंग होती है एंड फाइनली वर्किंग कैपिटल में जो एडजस्टमेंट होती है, इन तीन चीज़ों को एडजस्ट करके हम हासिल करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड terminal cash flow. So in one line we can say that terminal cash flow is the sum of the last year's incremental cash inflow and the adjustments related to the disposal of the asset, tax adjustments and working capital.